Hello, hello, and welcome to GRC. We have got a very special guest here today, and this is not just your, normal analysis, and that's why I've returned to your screens as well. What we're going to discuss today is very much fun, and it's basically how to prepare for an India-Pakistan Clash fan edition. And since we're all fan of the game, at least in the start, we're going to be talking to one of the biggest names that and I'm a huge fan of this person as well, and that's the only reason why I've returned, by the way, as well. So let's welcome Ahmer Naqvi. Ahmer bhai, it's so wonderful to have you here. How are you? I'm great. I'm glad we're wearing the same shirts to this. It's a nice kind of optical illusion for This everyone. was not planned. This was not planned. Like, I'm sitting in Lahore right now. I remember sitting in Karachi somewhere, so it wasn't planned. But you know what? It's a good sign. I think we're on the same wavelength. So we're Yeah, gonna have for sure. we're gonna have some fun conversation. So obviously, starting off with the upcoming clash, I remember India Pakistan, always a big game. I think it makes fans more nervous than the players, probably. I don't know. I feel like they've got some very strong nerves, but we might not have them. So as a fan, how do we prepare for a game like this? They are like this basically. ना पाकिस्तान इंडिया मैच एक इतनी इतनी कोफ्त होती है उसके बारे में सोचने से क्योंकि आई गेस पिछले 6 सालों में तब भी आपको थोड़ा बहुत काफ़ी अच्छे मैचेस भी मिले हैं और पाकिस्तान ने जीते भी हैं तो um, उस तरीके में आई गेस लाइक बेहतर है बट आई गेस जैसे मेरी जब अब मैं 40 साल का हूँ तो मैंने जो पूरा अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारी है वर्ल्ड कप 50 और वर्ल्ड कप पे पाकिस्तान को हारते हुए देख और मैं कैसे ये बात कर रहा था कि T20s में जो मैचेस हुए हैं, जो T20 वर्ल्ड कप में जो मैचेस हुए हैं, वो काफ़ी अच्छे हुए हैं। जहाँ हारा भी है पाकिस्तान तो मैचेस बहुत ज़बरदस्त थे, whether that's the 2007 final, the 2007 group game, last T20 वर्ल्ड कप with कोहली at the MCG. बट वनडेज़ में एक्चुअली हमारा कभी भी कोई अच्छा मैच भी नहीं हुआ है, like Mohali and Bangalore are probably one of the better ones in terms of how close they get. तो Yeah. उस तरीके में क्या प्रिपेयर करें आप क्या करें यार हर दफ़ा वट आई थिंक आज मैं ये बात करता कि जो ज़्यादा मुझे फैसिनेटिंग चीज़ लगती है कि इतनी दफ़ा हारने के बावजूद भी लोग हर दफ़ा उतना ही कि वो दोस्तों से मिल रहे हैं और स्क्रीनिंग्स अरेंज हो रही हैं और बिरयानी बन रही है और लाइक दूध सोडा एंड व्हाटएवर सो आई थिंक कि उस तरीके में इट रियली डजंट मैटर अब मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि मैच पाकिस्तान जीतता है या हारता है मतलब वो एक ऐसा दिन है जो सबने एग्री कर लिया है कि इस दिन हम लोग सिर्फ ये चीज़ करेंगे एंड आई थिंक कभी भी सोसाइटी में जब ऐसा कुछ होता है यूजुअली दैट्स लाइक अ वेरी गुड थिंग कोई ईद है या कुछ है इट्स लाइक अ बैड थिंग Yeah. but it's something that brings people together. Oh, absolutely, I think. And like you said, T20 में we have had some clashes जो कि काफ़ी close रहे हैं. But one day में it's still uh, वो एक हसरत है अभी to have that Yeah, kind of a game where we have fought with everything that we had on the field. But yeah, T20s obviously those are सात से अगर हम बात करें what a we played in the end final, lost on the last game of the match. That was very close, and it's always been close in T20s. So जहाँ तक बात है one day की और fan wars की, related to a 50 over World Cup. We अभी हमें ना बहुत different दो sections देखने को मिल रहे हैं. Since Pakistan is already in India, they've already played 2 games in Hyderabad. We've seen some great support in the ground for them, which was a little bit shocking to me because I wasn't expecting that. But on the social media, it's still all swords and वो तलवारें निकली हुई हैं अभी दोनों end पे इस वक्त. So Abhi, so I know that we haven't had any close games with India in the past, and Abhi Asia Cup maybe was a disaster for us. Do you really think that this time we're actually going to get a competitive game, or is it just going to be the same as the 2011 and the 2019 and the rest? देखो अब तुम भी इस फील्ड में हो ठीक है माशाल्लाह से you're transitioning over to managing being a GM for a team but like you worked on this end तो क्रिकेट का जो है ना हमारा एक तो होता है कि ये बाकी स्पोर्ट्स होती है ना उनका एक सीजन होता है प्रीमियर लीग का है ला लीगा का है बास्केटबॉल का है व्हाटएवर द हेल राइट क्रिकेट में जो है वो हर मुल्क अपना एक सीजन चला रहा होता है जो ओवरलैप करता है नहीं करता है ये करता है वो करता है बीच में यार श्रीलंका से सीरीज कर लो अच्छा इनसे कर लो ये कैंसिल हो गई ये शुरू हो गया ये मल्टी टूर्नामेंट हो गया फलाना ढमकाना तो क्रिकेट में जो है ना जब आप एज ए जर्नलिस्ट काम कर रहे होते हैं ना तो आपका वो होता है जैसे आपकी दिहाड़ी लगती है
कि लाइक यू डोंट रियली हैव अ स्टेडी काइंड ऑफ गिग, क्योंकि आपने ठीक है शो कर लिया, कुछ लिख लिया, फिर मैचेस ही नहीं हो रहे 6 महीने के लिए, तो नो वंस गोइंग टू गिव यू अ स्टेडी जॉब। तो इंस्टेड ये होता है कि भाई सीजन आ गया है, अब जो जल्दी जल्दी जहाँ भी मिल रहा है ना, तो अब मतलब मेरे और आपके लिए, हमारी रोजी रोटी के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि हम बोले हाँ जी, उस मैच में बहुत कुछ हो सकता है और ये होगा वो होगा, क्योंकि मतलब हम नहीं बोलेंगे तो हम क्या करेंगे भाई। यही That's यही true. तो टाइम मिलता है हम लोग को कि ये शो वो बनाएं और लोगों को बोले हाँ ऐसा होगा वैसा होगा ये होगा वो। ऑब्वियसली अगर आप एक मैच 7 दफा हार चुके हैं और हर दौर में हार चुके हैं और हर किस्म की टीम से हार चुके हैं, तो ज़्यादा उसमें सोचने की ज़रूरत तो है नहीं। मगर जैसा कि मैंने कहा कि पिछले कुछ सालों में काफ़ी बेहतर खेल रहा है पाकिस्तान। आई थिंक कल वाला मैच इसकी सबसे बेहतरीन अक्कासी है कि पाकिस्तान क्रिकेट के साथ लॉजिक लगाना और ये कहना कि वो 7 हार गए तो 8वां भी हार जाएगा का कोई मकसद नहीं बनता। आई थिंक कि जो आपने एक और बात की कि देखें, सोशल मीडिया पे अगर आप सिर्फ रहे हैं तो आपको तो यही लगेगा कि लोग मार पीटने को दौड़ रहे हैं, और एक तरीके में हमें ये दिखाई भी दिया कि किस तरीके से पाकिस्तानी सहाफ़ियों को वीज़ा नहीं मिले हैं, या जो वहाँ पे पाकिस्तानी मौजूद हैं उनके साथ सिक्योरिटी की गारंटीज नहीं दी गई उन्हें। बट जहाँ तक प्लेयर्स के साथ जो हमने देखा कि एयरपोर्ट पे उनका इस्तकबाल हुआ, या कल जो ग्राउंड में नारे लग रहे थे, जीतेगा भाई जीतेगा पाकिस्तान जीतेगा, तो एक तरीके में आपके तसव्वुर में यही था कि अगर इंडिया में ऐसा कोई करेगा तो उसी वक्त उसे गोली मार देंगे। तो मे बी like that's not the reality. That being said, this is in Ahmedabad at Narendra Modi Stadium. So I would expect a certain kind of politicization of the whole encounter. And आई थिंक उस तरीके में जो एक यूजुअल एक्साइटमेंट और नर्व्स और सब कुछ होती हैं इस मैच के साथ जुड़ी हुई, उस पे एक एडेड टेंशन मेरी नज़र में ये भी है कि इस मैच का जो भी नतीजा हो उसका फॉल आउट क्या होगा, दोनों मुल्कों में क्या होगा, कैसे होगा ये वो। तो उस तरीके में बेहतर है कि टूर्नामेंट के शुरू में है। और आई थिंक कि एज लॉन्ग एज मतलब वही वही मैं कह रहा हूँ ना कि हमारी दुकान तभी चलती है अगर मैच अच्छा हो, ठीक है। अगर Absolutely. नहीं भी अच्छा हो, जो नहीं होता, तो इतना क्रिकेट में दिलचस्पी है कि हम लोग ये मंजन बेच रहे हैं अभी। कि हम उसको खुद इंटरेस्टिंग बना लें थोड़ा सा। आई मीन आफ्टर दैट्स द ग्रेट थिंग अबाउट इंडिया पाकिस्तान, यू डोंट हैव टू वर्क ऑन दैट, लाइक अगर अभी हाँ ये पाकिस्तान और किसी ऑलमोस्ट किसी भी और टीम के साथ एक होम सीरीज भी हो रही होती, तो हम थोड़ा मेहनत कर रहे होते, बट इट्स इंडिया पाकिस्तान, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग। Yeah, but it seems like थोड़ा सा ये एक I don't know, I don't know if it's mutual, with our neighbors or something like that, but it seems like that the narrative around Pakistan team being in India, it's been hyped up a lot as well. अगर आपने थोड़ी news वगैरह देखी होगी, so there was no opening ceremony, right, at the start of this tournament, but अब ये news आ रही है that there is going to be a ceremony before the India Pakistan game. So ये जो special treatment है, ये जो VVIP treatment है, do you think that makes the other teams feel like the middle child? आई मीन अगर आप क्रिकेट खेलते हैं प्रोफेशनली और आपका इंडिया से ताल्लुक नहीं है, तो ये तो आपको सारे वक्त एहसास होगा। और इनफैक्ट मिडिल चाइल्ड, तो हम सिर्फ एक चीज़ की बात करें ना, क्रिकेट की तो जो कास्ट सिस्टम है वो बहुत वाजे है कि आपके पास इंडिया है, फिर उसके बाद जस्ट बिलो दैट इज़ इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, फिर उसके बाद डिपेंडिंग ऑन द what the situation is, it's either one of like the remaining white countries, or maybe like a Pakistan, and then you've got like the smaller countries that have great teams but don't have like the financial clout, West Indies, the Sri Lanka, etc. And then a lot of other teams that have a lot of potential that the ICC is not interested in developing. तो क्रिकेट में तो ये अगर आप सवाल पूछो ना, तो सवाल में एक बात इम्प्लाई हम कर रहे हैं कि एट सम पॉइंट लोगों को इक्वल होने का एहसास, तो वो बिल्कुल भी कभी भी नहीं रहा, राइट। लाइक क्रिकेट जब से शुरू हुई है तो एक कॉलोनियल स्पोर्ट थी, और अंग्रेज चला रहे थे, और फिर उनके हाथ से निकल गई, और अब इंडियन चला रहे हैं, और उसमें कोई यही लाइक एवरीवन इज कॉन्स्टेंटली इन एन हायरार्की। That's true. So हमने बात की अब इस सारी चीज की from a journalistic point of view, but since this is fan edition, so as a fan, Amir bhai, tell me what is your most painful memory
of India Pakistan Clash? I know it's hard to pick. There's so many of them, but Hmm. what is that one memory that still makes you shudder right now? Whatever happens on October 14, बस ये नहीं होना चाहिए. वेल नहीं होगा. आई हैव चेंज्ड एज अ पर्सन, क्योंकि Okay. 2011 में आई स्टिल काइंड ऑफ थिंक दिस, मगर 2011 में मैच से एक दिन पहले पर्सनल लाइफ में कुछ चीज़ें चल रही थी, और मैंने अपने आप को कन्विंस किया था कि अगर ये इस चीज़ का मैं हल ढूंढ लूँ, तो पाकिस्तान मैच जीत जाएगा। और जब पाकिस्तान मैच नहीं जीता तो आई रियली ब्लेम माई सेल्फ फॉर दैट. आई थिंक कि उसके बाद दैट आई जॉइन थेरेपी अ फ्यू इयर्स लेटर, एंड माय मेंटल हेल्थ एंड सेल्फ एस्टीम इम्प्रूव. तो अब मैं डेफिनेटली अपने आप को ब्लेम इस तरीके से नहीं करूंगा. उस वक्त भी, और शायद अभी भी मुझे मतलब काफी हद तक यकीन है कि हम लोग हादी का सेमीफाइनल मेरी वजह से आ रहे हैं. So I would put that as the most painful, and I think Bangalore would come up next because as a child, the first World Cup I saw was 92. तो जब तक बैंगलोर का मैच हुआ था अब तक, so Pakistan had was world champions until that match in my whole life, right? Yeah, Like that, like the I know. that's how my life started. Like we were world champions. Then it ended at Bangalore, and at least in the 50 over version, it has not resumed. Yeah. So I think that would be the second most painful. Okay, so mine was Mohali. I'll just share that. इसलिए because that's the only one I can remember. I don't You remember उससे tell for the पहले rest वाला. of that. I don't remember उससे पहले वाला. The earliest memory that I have is the 2007, but since that was a T20 World Cup, I'm not really going to count that. But Mohali was the first time I actually cried. Ugly tears, वो sobbing वाला जो cry होता है ना, in my, like, in front of the family, I was fine. I was like, you know what? I knew Pakistan was going to win. I'm fine. I'm okay. But then I went inside my room and I just sobbed for 10 minutes. And I came back with all my red Hello eyes and from my cat. oh, we have a surprise. We have a surprise entry. So and just came out with eyes bloodshot. So I really hope that none of the next generation feels that coming up. But to that point, I feel like since I've seen all of those games 2011, 2015, 2019, I feel like the body language and the way that the current players carry themselves in India Pakistan clashes has changed over the years a little bit. Why do you think that is? And if they have changed, if you agree with that point, how can we fans get rid of that PTSD that we have regarding 50 over World Cup and not defeating India at all? Um, how to get over PTSD is I think ये एक बड़ा interesting सवाल है, क्योंकि I've been thinking about this a lot, and I've written something that'll come out in a month or so. कि Okay. मेरी नज़र में एक्चुअली फैंस को मसला नहीं है, क्योंकि आप अगर मैं आज ही एक और पॉडकास्ट भी की थी, उसमें मैं मौका मौका वाला एड समझा रहा था कि उसमें ये कहता है कि ऑब्वियसली बड़ा वो हमारी लगी थी और उन्होंने हमारी ले ली, हाँ 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 ये वो. बट जो उसमें एक चीज जो आपको नजर आ रही है कि इवन द पाकिस्तान हैज लॉस्ट ऑल दोस मैचेस, द गाय शोज अप विद फायरवर्क्स एवरी टाइम, राइट? And Right. you have done that every time. You've shown up for every, and when I say you, like I'm talking like people watching this as well, right? आप सब लोग ने हर दफा जब पाकिस्तान इंडिया का वर्ल्ड कप में मैच होता है तो नहीं, मे बी कुछ लोगों ने छोड़ दिया एक दफा दो दफा. If you watch cricket, and usually even if you don't, पाकिस्तान इंडिया का मैच इज वेरी हार्ड टू अवॉइड एट अ वर्ल्ड Yeah. कप. सो आप देख रहे हैं ना फिर से हर दफा, तो वो एक्चुअली आई थिंक ये पीटीएसडी और ये और वो, like I think more about it, it's like a big part of, it's a part of it. Like we're actually, we hold on to it. We don't want to get over it. And ये अब बहुत इसमें गहराई में जाना होगा, इतना टाइम नहीं हुआ है. दूसरा जो आपका सवाल, इसका पहला पार्ट क्या था कि I just feel like the body यस, बॉडी language लैंग्वेज. and the यस, इसमें confidence बड़ा that our स्पेसिफिक, player इसकी carries इसकी now. Huh. इसकी बड़ी स्पेसिफिक रीजनिंग है. um, आपने ना तो उस्मान समीउद्दीन, बेस्ट राइटर इन पाकिस्तान क्रिकेट, उनकी किताब है द अनक्वाइट वंस, जिसपे इट्स अ हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट. So the final chapter, which covers basically the 90s and onwards, is titled like the decline or something, right? And why he's called it that is because the team is doesn't reach the heights that it does at the end of the 80s, early 90s, and uske baad, there's a lot of 9/11 and then Mumbai attacks and then the Sri Lankan attack all have like profound impacts के पाकिस्तान के अंदर पे क्रिकेट खेली नहीं जा पा रही थी, और जो नहीं खेली जा रही थी उससे काफी सारे बदलाव आए.
And so that's what he calls, right, the decline. Yeah. And उसका जो सबसे जो फाइनल फ्यू इयर्स थे, तो उसमें तो यही था कि पाकिस्तान जो है वो एग्जाइल में खेल रहा है यूएई में, खाली खाली स्टेडियम्स के सामने, अच्छी जो बड़ी टीम है उनके खिलाफ आपके मैचेस ही नहीं होते हैं। तो Yeah. जो आप आईपीएल से बैंड हैं, तो आपके खिलाड़ी जो हैं वो एक तो स्पोर्ट्स का जो सबसे उस खेल का, क्रिकेट का जो सबसे जदीद फॉर्मेट है, उसका जो सबसे बेस्ट लीग है, उसमें आपके प्लेयर्स खेल ही नहीं, ठीक है? Yeah. और उसी के साथ-साथ आपके पास अपने फैन्स के सामने भी आप नहीं खेल रहे हैं, तो आपकी मतलब वहाँ से भी कोई कनेक्शन नहीं हो रही, Yeah. राइट? एंड यू आर प्लेइंग इन कंडीशंस दैट आर वेरी एलियन टू व्हाट यू ग्रू अप प्लेइंग। उस पॉइंट पे इन अ लॉट ऑफ डिफरेंट वेज़ आप बात कर सकते हैं अबाउट द टीम, बट आपने क्योंकि सवाल पूछा था बॉडी लैंग्वेज और मेंटालिटी का, तो वहाँ पे भी मतलब अगर आप लाइक इफ यू आर वर्किंग in any job and you only work in like a regional department that really doesn't get to do much, and then all of a sudden you're get sent to Silicon Valley और वहाँ पे दुनिया भर के लोग आए हुए, it's pretty like I don't want to speak for the players or anything, मगर एक तरीके में जो भी होगा it takes a lot of confidence to feel like you belong in a place, right? 2016 में चेंज क्या आता है कि आपके पास पीएसएल आता है, राइट? एंड दिस स्टोरी आई रियली लाइक टेलिंग, क्योंकि दो कहानियां का, एक ये था कि कुछ पाकिस्तानी प्लेयर्स थे और वो ड्रे रसल के साथ थे और दुबई में लोग मॉल जा रहे थे, और वो कह रहे थे कि यार आप हमें बताएं हम कौन सी ब्रांड से जाके शॉपिंग, Okay. तो डीजल जाएं या डॉल्चे एंड गबाना, whatever the hell, right? And Dre turns to them, and Dre Russell at this point, like this is why the PSL is important, right? Like Dre Russell, all of these people know is one of the biggest stars in the world, right? And now he's their teammate, which straight away Yeah. is like the most accomplished teammate most of them have ever had. A lot of these guys are like domestic players; they are not even national. और उसी मतलब ड्रे एक टीम में था, दूसरी टीम में जैसे विव रिचर्ड्स था, like I was there the first time Viv Richards takes the Quetta squad into a huddle and he speaks to them. And even if you don't know who Viv Richards is, Viv Richards has a lot of charisma, like straight up. Yeah. तो अब ये खिलाड़ियों को इस किस्म का एक्सपोजर मिल रहा है, तो ड्रे को कहते हैं हम कौन सा ब्रांड दें, तो कहता है कि लुक, व्हेन यू आर द स्टार इट डजंट मैटर तुम फेक पहन लो, तुम स्टार हो फेक भी रियल, ठीक है? सो एंड यू कुड टेल लाइक दीस गाइस आर लाइक व्हाट एंड What? एंड अब आप कहेंगे कि अच्छा ऐसी चीज़ें क्या फ़र्क पड़ता है, तो 2017 में आई वाज़ वर्किंग विद इस्लामाबाद यूनाइटेड और टूर्नामेंट शुरू होने से पहले हम 2-3 दिन पहले पहुंचे हुए थे और एक इंट्रा स्क्वाड मैच हो रहा था, and so all like the younger guys are playing Gabo, and I'm standing with current national team selector Rehan, Hassan Chima, and current national team manager Rehan, and Wasim Akram हमारे पास आता है, and he Wasim भाई is like यार ये तुम लोग ने बड़ा अच्छा लड़का ढूंढा है, and they're like जी ये वो, उस वक्त वो बैटिंग कर रहा था और खत्म होता है मैच, and like I just check the scorecard and this one guy has taken wickets and made runs, so I go into the bus, he's already one of the first ones there, बड़ा shy सा बंदा है, and I'm like मुझे आपकी पिक्चर लेनी है सोशल मीडिया के लिए, so like he gives a please and like smile while कर रहा है, and you know and we haven't played a match or anything, he hasn't made his debut, so like we post this okay, oh are up and coming, watch out for this season. So this happens in February. In July this boy is getting Yuvraj Singh out in the Champions Trophy final with Shadab Khan, right? And Yeah. so you could see this guy who was just making his debut now, and you'd seen younger players come through before as well, but they were not being exposed to that stage. क्योंकि जैसे ही Yeah. आप पीएसएल खेल रहे हो तो आपको अब पूरा पाकिस्तान देख रहा है, उनको घरों से फोन वोन आ रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, आपको लाइक दिस crowds, ठीक है हर मैच में इतने बड़े नहीं होते थे, but by the time especially getting to knockouts you're playing in like tense situations, foreign players, big crowds. तो पिछले इतने सालों से जो प्लेयर्स थे दे आर नॉट, मतलब आपको एक्सपोजर किसी चीज का है ही नहीं, पहली दफा आप जा रहे हो वो वर्ल्ड कप का मैच इंडिया के खिलाफ, Yeah. दैट्स जस्ट नॉट अ फेयर एक्सपेक्टेशन ऑन एनीवन, राइट? लाइक आप किसी Mhm. चीज के लिए प्रिपेयर ही नहीं कर रहे हो किसी को, Yeah. तो वो यू डोंट हैव द टूल्स टू डील विद इट. So I think like they were great players in that era. They had a lot of confidence. So जब उनको मौका मिल रहा था, they could do it. But consistently, उस जनरेशन के पास वो एक्सेस नहीं थी जो पीएसएल जनरेशन. तो अब जो अब Mhm. अपनी साइड का कोर देख रहे हैं, बाबर है, शाहीन है, शादाब है, हारिस रऊफ है. So these are all PSL stories. These are not people who were like, yes, Babar was already a little bit on the spotlight before the PSL, but really these are all PSL stories. And so when you see these guys, when they play
India in the Champions Trophy when they play India in the World T20. जो आप बात कर रही हो कि ठीक है उनकी बॉडी लैंग्वेज फर्क है ये वो बट ऑल्सो एट द सेम टाइम उनका तजुर्बा फर्क है Yeah, they've been playing high quality high intensity matches regularly from the start of their career right yeah, तो वो yeah, एक्सपोजर जबकि अगर आपने मे बी 2009 में अगर डेब्यू किया होता तो आपने पाकिस्तान में खेला ही नहीं होता yeah. आप बिल्कुल दुबई बिल्कुल. में खेल रहे होते हो और दुबई में ज्यादातर हमारे जो मैचेस थे तो वो बायलैटरल्स हो रहे हैं जिसपे वही जो सबसे गरीब टीम है जो हम बात कर रहे थे कास्ट सिस्टम की तो वो Yeah, एक दूसरे से मैचेस खेले जा रहे हैं खेले जा रहे हैं खेले जा रहे हैं जो बड़ी टीमें वो एक दूसरे से खेले जा रही हैं और क्रिकेट yeah. ऐसी बेहंगम तरीके से चल रहा है Yeah, and I guess it got redundant at after some time as well. Like you said, अगर आप meaningless bilaterals खेल रहे हैं आपस में with the same kind of team, same kind of squad, you're not actually growing. You're just repeating the same cycle over and over again. आई मीन पिछले 150 साल से क्रिकेट ऐसी चल रही है और Yeah. अब क्योंकि फ्रेंचाइज क्रिकेट आ गई है और फ्रेंचाइज क्रिकेट का एक सीजन होता है तो अब ये एक फर्क आप देख ही रहे हैं कि अगर आपने Mhm. पीएसएल के साथ काम करना है तो Yeah. उसमें ठीक है साल में 6 हफ्ते दिहाड़ी लगती है आपकी बट everyone knows when it's going to happen everyone knows who's going to play everyone knows everyone's going to play everyone so Yep. you can at least plan something you can invest something right Yeah. आपको जब पता ही नहीं है कि अगले साल पाकिस्तान की कोई कौन सी सीरीज कब पक्की है कब नहीं है बीच में ये हो गया वो हो गया तो आपको क्या करोगे फिर तो क्रिकेट एक्चुअली अमेजेस मी कि इतने सालों से चला जा रहा था विदाउट एनी कॉन्टेक्स्ट टू एनीथिंग इन्होंने इनको हरा दिया उन्होंने इनको हरा दिया वो कह रहे हैं हम अच्छे हैं ये कह रहे हैं हम अच्छे हैं ऐसे ही चलता आ रहा है Yeah, yeah. And you mentioned, Champions Trophy as well. For a lot of our guys, the younger ones we're talking about, that was their probably their first encounter with India, right? And ODI format, final of a Champions Trophy. I think that had a huge impact on these players as well, who were just barely, I think, 19, 20 years old at the time. On average, I would say we spoke about Shada, spoke about Babar and all the young guys. So that had quite a bit. Do you really think that that had that effect on them? That what, maybe we can win if we play good on the day. It's not something that's impossible to pull off in a multi-team tournament for Pakistan to beat India. या आई थिंक कि देखें अगर आप 90s में पाकिस्तान 3 दफा हारता है इंडिया से वर्ल्ड कप ठीक है anyone who was following cricket at that time everyone knew that maybe 96 but like I would say I mean maybe I'm biased but I would say that it was pretty clear that overall Pakistan was a better team Yeah, throughout that decade and at the moment all of those matches happened as well right like in 92 and 99 Pakistan makes it to the final both times India doesn't have a great tournament. And in 96, obviously India knocks Pakistan out, but again, arguably full strength Pakistan side had been a lot more stronger than India had been. But India played well in these crunch encounters. Point was कि उस वक्त तो ये था कि ये anomaly चल रही थी, right? It's after 2003 and Mohali where it feels like the teams are now on a different trajectory. कि अब yeah, जो है इंडिया की टीम बड़े मैचेस it maybe this wasn't a fluke now they've actually beat us in these big games और वो yeah, obviously आपके ऊपर एक चीज बैठी हुई होती है and a lot of times जो when in any field जो यंग लोग जब खेल रहे होते हैं कर रहे हो कुछ भी कर रहे होते हैं तो उनको पता नहीं होता है कि आप गलत क्या कर सकते हैं so like when you haven't really lost against India then you can even though those guys did lose the first match against India in a very demoralizing way but then they had this amazing tournament और मेरी नज़र में तो I think that was it validates the PSL theory कि बाकी पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ आपको like players जो उनके superstars emerge हो रहे थे वो franchise leagues की वजह से हो रहे थे पाकिस्तान में PSL is one of the much later ones to start yeah. um, तो उस तरीके में आप अपने प्लेयर्स को एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज के साथ रख रहे थे राइट और सो मेरी नज़र में तो मतलब इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि दैट्स रियली द PSL that changes because obviously then it's a cascading thing because PSL happens and then teams start coming slowly gradually to Pakistan and that really helps and blah 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 but I think the big turning point is the PSL. Absolutely. बिल्कुल. 90s की बात की आपने. Obviously, I do not have a lot of memories of 90s. I was a baby. But I would like you to share at least one of those memories where, although I understand that we lost a lot of games to India, all of the games that we had in encounter, but वो एक performance from an individual performance I'm talking about from that Pakistani player in the 90s or early 2000s.
that resonated with you, that you still feel like In the a, World Cup in the World Cups, yes, that you still feel against like was India. exceptional against India? Yes. Do you Mm. have that one performance? Yeah, I think the only thing that comes to mind as a pleasant memory is Javed Miadad versus Kiran More, where Miadad kind of starts hopping और वो उसकी नकल कर रहा था या उसे तंग कर रहा था या उसे तंग आ चुका था। Okay. और उस वक्त तक ये था क्योंकि मैं अगेन लाइक ये मैं 8 साल की उम्र पे पहला वर्ल्ड कप देख रहा था तो ऑब्वियसली मुझे तो कुछ नहीं पता था और मुझे याद है कि मैं पूछा था ये क्या हो रहा है और लाइक what I remember was that there was an understanding that like Mia Dad is like your biggest star, and particularly because of that last ball six in Sharjah, Yeah. there was this expectation कि मियां दाद खेल रहा है तो पाकिस्तान मैच जीत जाए तो Okay. so I think when he was doing that, it to me like कि Pakistan is has always been like a random team like it's a weird team, so I think like that was one of the first Yeah. moments जहाँ पे था कि I mean Miadad is a legendary weird person in on the field. That was part of his persona, and Yeah. I think I've always been attracted to these larger than life characters, and that was the first time that I saw that happening with him, and that was an India Pakistan World Cup match. Right. And have you ever thought about, like, in that era, जो 90s का हमारा era था, how different would things be if उस time के जो आपके players थे, if they had access to social media, how different their mindset would be of things. क्योंकि अभी हम देखते हैं ना, अभी हमारे हमारे जो cricketers हैं, they're very humble on social media. They keep things very simple. They don't fight. But then you look at the ex-cricketers. They are unhinged a lot of times. So they say things, they post things that you don't expect your current players to do. So do you think that if the 90s wale jo hamare cricketers they were early 2000, if they had access to social media, what would the whole scene basically look like in your head? तो एक बड़ा दिलचस्प सवाल है क्योंकि अभी पिछले महीने मेरा हमें मौका मिला था मुझे और उस्मान को पॉडकास्ट करते हैं बट्टा फास्ट के नाम से और हमने दोनों डब्ल्यूज का इंटरव्यू किया था Yeah, वसीम और you वकार definitely saw that. That और was wonderful. थैंक यू और उसमें दोनों से हमने ये बात भी पूछी थी सबसे पहला सवाल यही था लाइक अबाउट लाइक द फैक्ट दैट दे वर आइकॉन्स लाइक स्टाइल आइकॉन्स मतलब उनको देख के हमने अपने बालों का डिजाइन या मूछें या चेन या व्हाटएवर वाज बिकॉज ऑफ देम तो उसमें दोनों ने ये बात की थी कि लाइक अरे यार एसेंशियली कि हम लोग वी वर यंग और हमें शौक थे ऐसे शशकों के और क्योंकि लाइक हमने वसीम वसीम भाई से पूछा था आपकी बाली होती थी मीन्स लाइक हाँ और उस वक्त क्योंकि सोशल मीडिया नहीं था तो मुझे पता भी नहीं था लोग क्या कह रहे हैं मैं सिर्फ अखबार पढ़ता था अखबार में ऐसी बातें नहीं आ रही थी Yeah. एंड वकार ऑल्सो सेड समथिंग लाइक मैं आई लुक बैक एट दोज पिक्चर्स नाउ एंड आई एम लाइक व्हाट द हेल ये वो बट उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था तो चिल था सो दे बोथ डिस्क्राइब्ड इट एज अ ब्लेसिंग कि Yeah. we were able to live our lives and मतलब what they were implying was कि जो हम में style या swag था वो शायद इसीलिए था क्योंकि हमें कोई criticism सुनने को नहीं मिल रही Yeah. तो There's essentially no that was feedback to those things. या तो वो उस Yeah. तरीके से कह रहे थे आई थिंक कि मे बी पाकिस्तान टीम में इतना अभी तक नहीं है बट इस उम्र के जो एथलीट्स आ रहे हैं तो अब मैं मिसाल दूं यूएस ओपन अभी जीता है कोको गॉफ ने वाज लाइक अ टीनेजर राइट Yeah. आई थिंक इस उम्र के जो एथलीट्स आ रहे हैं ना तो उनका सोशल मीडिया देव ग्रोन अप देव लिव्ड इन अ वर्ल्ड वेयर सोशल मीडिया ऑलवेज एक्सिस्टेड तो उनका रिलेशनशिप विद सोशल मीडिया प्रॉब्ली बहुत वैसे ही मुख्तलिफ होगा क्योंकि दिस इज नॉट समथिंग दैट्स अनगुड आई थिंक अगर 90s में होता सोशल मीडिया तो आई it's like so that's the question if you ask Wasim and Wakar they'll say कि भाई होता हमें criticism मिलती और हम we would have had to kind of tone down But what right about someone like Shoaib Akhtar? If he had access I would to say, social yeah, I would say media, even young Wasim and Wakar or young Shoaib, I would yeah, say it would have been even better because like this was a big time of you know जो अब सोशल मीडिया पे जैसे होता है ना जो चीजों लोगों को पसंद है कि फड्डे कर रहे हैं मिसबा अफरीदी बाबर शाहीन whatever whatever तो वसीम वकार या वसीम इमरान were like the prototype like that was main what characters after. yeah, Yeah, generation is defined by things like those. I think also culture उस जमाने में क्रिकेट इन पर्टिकुलर पॉपुलर कल्चर का एक बड़ा हिस्सा बन रहा था तो हमारे जमाने में ना मतलब लोग
ये सब बहुत करते थे जो आई फील दैट so what I would say is that energy always existed and social media gave it a different place because लोग क्रिकेटर्स का फोन नंबर ढूंढना दिस Mm. वाज लाइक एवरीवन वुड बी ट्राइंग और ऑब्वियसली लैंडलाइंस होती थी तो लोगों के घरों के नंबर मिलते थे और ये था कि जी मेरी स्कूल में एक लड़की थी उसके घर पे लाइक किराए के लिए या खरीदने के लिए मोइन खान की फैमिली आई तो उनके पास Oh. अब नंबर आ गया था तो Oof. लाइक अब वो नंबर या शाहिद आफरीदी का नंबर तो एक लेजेंडरी एसेट था इन द 90s Yeah. people would be going to the hotels जो अभी भी कर रहे होते हैं वहां जा रहे होते हैं और जो भी मतलब आई थिंक मेरी एक दफा ये बात हो रही थी कि पाकिस्तानी क्योंकि हमारे यहाँ और जैसे मूवी शूवीज नहीं हैं जो और मुल्कों में आपके पॉपुलर कल्चर का होता है तो Yeah. हम अपने क्रिकेटर्स के ऊपर ना कि इसका क्या पहले से ही उस लेवल पे सेलिब्रिटी वर्शिप करते आ रहे हैं जो अब हर बिल्कुल. सेलिब्रिटी के साथ होती है बट क्रिकेट में वो होती थी तो जो जो मैगजीन्स भी होती थी उसमें हमेशा ऐसे सवाल होते थे कि आपका फेवरेट कलर क्या है और शादी कब करेंगे और लाइक एवरी इमरान ख्वाब भी खान इंटरव्यू टॉक्स ख्वाब अबाउट भी होते हैं. Nothing has तो changed. वही ना कि वो अब वो लोग इंस्टा की कमेंट पे कि ब्रदर व्हेन विल यू गो फॉर हज और व्हेन विल यू मैरी वो पहले वो तो वो एनर्जी पाकिस्तानी फैंडम में हमेशा थी खास तौर पे 90s में आई थिंक पैदा होना शुरू हुई थी तो Right. अगर उस टाइम पे सोशल मीडिया होता तो आई थिंक यही सब जो अभी चल रहा है probably be turbocharged because like a that like I'm just gonna open myself up to Gen Z trolling but I would Okay. say that एक फर्क था कि वो लोग वर्ल्ड चैंपियंस थे so they had more of a swag than Yeah. the current team which I love I think is amazing I think But is that's a wonderful fact. They were uh, world champions. हाँ. yeah and the thing was कि क्योंकि अब whether we like it or not IPL is like one of the biggest focal points of cricket और उसमें पाकिस्तानी नहीं खेल पाते and that's one of the reasons I think India में इतनी curiosity so that was not the case in the 90s वाला era like they were very much at the center of काउंटी में सारे खेलते थे शारजा में सारे खेलते थे तो उस वक्त जो क्रिकेट की कटिंग एज या जो कुछ भी थी these guys were really at the center of it Right. and the 90s was also a time where England and for half of the decade Australia were quite weak. Yeah. So they were also, had this claim of being like possibly the next best side after the West Indies dynasty, like would be the Pakistan dynasty, which Yeah. I think, as good as this team is not a discussion that people are having. तो I उस guess. तरीके में मैं यही कहूँगा कि ये था बट ऑब्वियसली उस टाइम पे क्रिकेट इतनी मकबूल नहीं थी क्रिकेट की फैंडम इतनी पुरानी नहीं थी तो अब जो जो फैंडम का सीन है इज ऑब्वियसली much deeper much more Yeah. more intense and whatever but I think कि अगर उस टाइम पे भी सोशल मीडिया होता it's just that the 90s so much of what defines the 90s was कि उस टाइम पे कुछ था ही नहीं मतलब Yeah. एक या दो टीवी चैनल थे राइट या Mhm. मतलब कि मीडिया का रोल बहुत कम था इंटरनेट नहीं था मोबाइल Yeah. फोन्स नहीं थे सो like it's a very bizarre thing to even imagine कि उस टाइम पे सोशल मीडिया के साथ होता तो क्या होता बट आई वुड से कि क्रिकेट के अगर हवाले से हम बात कर रहे हैं we would see pretty much a lot of what we see now uh, Mhm. you know yeah just as crazy probably like when you Absolutely. imagine Twitter waking Yeah. up like we did I was 13 years old Yeah. and we wake up तो अब obviously again अब आपको होता है उसी वक्त वो हुआ है उसी की वीडियो आ जाती है सब कुछ आपके पास वेबसाइट पे हो जाता है राइट उस वक्त ये Instant हुआ है कि gratification. या Yeah. अगली Yeah. सुबह को हम उठे एंड आई एम नॉट सेइंग थिंग्स आर बेटर इन माय डे आई लव इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन आप अगली सुबह को उठें तो वो मैच था वो टीवी पे नहीं आया था so anyone who ever tells you they saw it live they're lying because it didn't come on TV सुबह को उठें और like कभी होता था कि अगर बड़ा लाइक बेसिकली अखबार रात के वक्त छपता था तो रात को जो स्टोरी आती थी तो अक्सर होता था कि वो मैच अगर लेट खत्म हुआ ना तो उसकी वो फ्रंट पे अगर बड़ा मैच है तो फ्रंट पेज पे छोटा सा डाल देते थे और फिर हाँ. अगले दिन स्पोर्ट्स पेज पे उसकी पूरी स्टोरी आती तो Ooh. एक ये छोटी-सी आई थी या नहीं आई थी या फिर अगर इनसेट था सिर्फ़ इसका, मुझे ये याद नहीं है। बट एनीवेज़ आई थिंक द नेक्स्ट डे वी वेक अप टू फाइंड आउट लाइक 16-year-old Afridi breaks ODI 100 record. And you're just like, who the hell won Insane. 37 balls? Like, Yeah. what just happened? And like फिर उसके कुछ अरसे बाद वीडियो आ गई थी या उसके कैसेट सब लोग like that was virality before virality. Like when viral it actually physical
कैसेट बांटनी होती थी, बट वो बट रही थी, हर बंदा उसकी टेप की कॉपी निकाल रहा था. um, Right. Imagine, Twitter kind of finding this out, like it would have melted. Absolutely. I think it was a fascinating time, no matter what anyone says. But since I don't have a lot of memories, I thought I'll just pick your brain and see ke aapko abhi tak kya kya cheezein yaad hai and what are you still fascinated about. So thank you so much for sharing all the stories and all your memories. I mean, bhai, it's always wonderful to chat with you because you're a wonderful person Thank and you. a wonderful entertainer as well. I'll just say this. I've never once been bored with you. So there we go. Thanks. But जाते Thanks. जाते we just want you to for the people जिनका ये पहला या दूसरा World Cup है, we're talking about the kids जिनका पहला दूसरा World Cup है and they're watching their maybe third or fourth India Pakistan clash. What is your one advice to them going into that game into October 14? What do they need to do to be prepared for it or hyped for it, however you want to put it? आई थिंक दैट इफ दिस इज योर पहला या दूसरा वर्ल्ड कप, तो मैं सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा, क्योंकि दिस एक ऐसा रिश्ता है जो आपकी ज़िंदगी में बड़ा अहम रिश्ता होगा और आपके साथ चलता रहेगा बहुत सालों तक. और जैसा कि आप मुझ जैसे बुड्ढों को देख के बता सकते हैं कि आपकी बहुत सारी, इवन जो सबसे मनहूस मैचेस थे, जो सबसे दर्दनाक मैचेस थे, उनके साथ भी कोई ना कोई अच्छी यादें जुड़ी रहेंगी. So congratulations on starting that journey. Further congratulations, because कल रात को आपने पाकिस्तान की तारीख में बेहतरीन चेज एंड आई थिंक वन ऑफ द ग्रेट वर्ल्ड कप मैचेस देखे. तो अगर वही आपने ये पहला दूसरा वर्ल्ड कप है, और अभी से अगर पिछला वर्ल्ड कप का पहला था, which was आई रियली लव पाकिस्तान दैट वर्ल्ड कप, उसकी फुल Yeah. हमारी डॉक्टर जैकिल मिस्टर हाइड परफॉर्मेंस थी. और Yeah. इस वर्ल्ड कप में आते ही पहले दोनों मैचेस, पाकिस्तान इज ऑलवेज सो एंटरटेनिंग. तो दैट्स अमेजिंग. और तो इसलिए मतलब जो भी होता है यार, इंडिया पाकिस्तान में टेंशन ना लो. लाइक मुझे आप देखें, हम लोग 8 दफा हार चुके हैं, मैंने अपना करियर इसमें We बनाया have हुआ है. survived. लाइक डोंट वरी अबाउट इट. लाइक आई कैन प्रॉमिस यू कि अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हैं, तो पाकिस्तान इंडिया के मैचेस से ज्यादा बड़े दुख आपको बहुत मिले. सो ये गारंटी के साथ है. That puts things into perspective now, doesn't या it? Absolutely. Thank you so much for sharing your time with us, everybody. It's wonderful to have you on the show. We hope you make a comeback anytime you're ready to. We'll आई always लव be इट. here to host you. And love that we're wearing matching shirts. This is such a great vibe, you know. I think we're going to या be making wearing a lot of matching shirts on October 14th as well. So good luck to Pakistan team. We're all hoping for a good result, but above all a good game as well because we've been starved of that. नहीं So नहीं thank you so भाई, much. पाकिस्तान जी, मुझे कोई भी गुड गेम से कोई इंटरेस्ट Okay, fair enough. So thank you so much and thank you, Amir bhai. नहीं. Have a ऑलराइट, good day, थैंक everyone. यू, टेक Thank you. केयर.